Good morning, students. Welcome back. Today's topic is the extension of previous topic from class 9, that is trigonometric ratios. So, briefly, I would like to remind you all that these trigonometric ratios, sample here, sine theta, tan theta, cos theta, sec theta, cosec theta, and cos theta can be calculated if one of the trigonometric ratio of an acute angle is, का मतलब ये हुआ, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर इफ इफ हियर sin theta is given, for example sin theta is given, that is 7 upon 25 is the sin theta. Now using this trigonometric ratio you can find other trigonometric ratios. Other trigonometric ratios, for example, you can find cos theta, you can find tan theta, you can find cosec theta, and similarly you can find sec theta and cot theta. These are only 6 trigonometric ratios. Now in this particular question, if we draw these triangles for our reference, here we have a triangle, this. So in this triangle, let us here, this is the our right angle triangle. Here in this right angle triangle, angle of reference, we name this triangle, this is the A, this vertex is B, and the third vertex is C, and angle of reference is here theta, and value of sine theta for this is given, right angle B. Now in this, using this sine theta, we can find hypotenuse and the perpendicular. So we can write here sine theta is equal to, that is the opposite side either you say, or you say perpendicular to angle of reference, and then hypotenuse. Particularly in this triangle, AB is hypotenuse and AB is perpendicular and AC is hypotenuse. Now on comparing this here with the value given in your question, that is 7 by 25, here you will find that AB and AC are in the ratio of 7 is to 25. Therefore here we will make an assumption, लोग इसको assume करेंगे कि AB की जो वैल्यू है वो एक्चुअली 7 नहीं है, 7 का मल्टीपल होगी, कुछ भी वैल्यू हो 7x, और जो हमारे पास में AC है ये जो वैल्यू है हमारे पास में 25x होगी. देखिए फिगर पर हमने इसको मार्क कर लिया, वी हैव मार्क दिस ऑन द फिगर, दिस इज 25x and this side is 7x. Now using Pythagoras theorem, applying Pythagoras theorem, this triangle, using Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem क्या है स्टूडेंट्स? Pythagoras theorem
थ्योरम इज। तो इन दिस थ्योरम इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड्स हैं, तो यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड जो है वो बी सी स्क्वायर है, और अपोजिट साइड जो है वो 7x है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिमेंबर, many time, most of the time, very oftenly, you people write this as 25x square, 25x square. This is wrong. This is not the correct. This is wrong. Always use bracket to make the whole square of this. Whenever you will simplify this, on simplification you will have here bc square plus 7 7 ja 49 x square is equal to 25 square is 625, and this. Now I hope everybody at this stage knows simplification. This is 625 minus 49 x. You can take common altogether, or you can write separately. It depends on you. You can write this here also, 625 x square minus 490, that is 49 x square. Same. So the difference of these two will be here 576 x square, and on finding its square root. Okay. Whenever you will go for the square root, you will get the value of BC. BC is here square root of 576 x square, and that is 24x. This way, using your Pythagoras theorem, what we have done, we have calculated the value of this here 25x, which is the missing value in this triangle. Because all trigonometric ratios are the sides of ratio of sides of this triangle ABC. Now we have got the three sides of this triangle ABC. Other trigonometric ratio, students, we can find here. We focus on this here. Look, this very first ratio is here sine theta. Sine theta is already given. Now next is cos theta. As we know students, cos theta जो होता है वो adjacent side कह लें या base कह लें, whatever you want to say, and then hypotenuse. Here in this particular question, your base, this is given 24x and hypotenuse is 25x. So x will cancel. Value of cos theta will become 24.35. The value of theta. Similarly, you can go for other values in this question. Here, if we go for the next values, here you will see sec theta. So sec theta is ratio of hypotenuse to base, and hypotenuse is here 25x. This particular question, base is 24x. This is 25 by 24. Now students, when we analyze these two results, this here as we can see is 24/25 and this 25/24. These are reciprocals of each other. You can say sine this cos theta is reciprocal of the sec theta. Cos theta is reciprocal of the sec theta, or sec theta is reciprocal of the cos theta. That means students, we can find value of sec theta directly if we are knowing the value of sec theta. So yeah, going back to our third ratio, that is here tan theta. So tan theta is
perpendicular is to base. In this question, perpendicular is your 7x and this is 24x. X again will cancel. This is 7 by 24. This is the value of tan theta. Now, cot theta, you know, cot theta is reciprocal of the tan theta, P upon P, or you can say 24 x on 7x, and that will give us 24 on value of cot theta. This way we have got tan theta, cot theta, sec theta, and cos theta, and the one more trigonometric ratio is left, that is cosec theta is student. Cosec theta is a reciprocal of the sine theta, you can say, or you can say hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse in this case is 35x and perpendicular is 7x. So cosec theta will become 25 upon 7. With this, we reach on the conclusion that these trigonometric ratios, all trigonometric ratios can be calculated if one of them is given. Other trigonometric ratios can be automatically calculated. Now we are taking the question number here, which is on your screen. Here, the question number, I hope, is readable. That is the very first question on your screen. Here, you can see your question there. Reading the question. Question is here. Wait for a minute. From the figure 1 given below, find the value of sec theta. Now your triangle is on your screen. Here. In this triangle, again I am copying the figure for you here. So look, this we have a triangle trying to frame for you. Yeah, this triangle, and the third side of this is your I've drawn for you. This triangle. Now third here side is given as a perpendicular dropped from this point. The perpendicular drawn and giving name to these points. Okay. This is the A. This is the point A. On this point is B. The third point is C.
And in this side is given 13, this side is given 5, and this total side, I say this total is given as a 21. Is given as a 21. Angle of reference here is the theta. This angle we need to find. In this question here, we are to find the value of sec theta. Question is here to find the value of sec theta. This is the very first. Sec theta is the question. To find the value of sec theta, we must know, as we know here, we write here, this is sec theta student. So sec theta we know, this is hypotenuse upon, or you can say reciprocal of the cos theta. So in this particular question, this angle is 90 degree and this is the hypotenuse which is also not given. This hypotenuse is not given. But we can find here this value BD. This is 21 minus 5. The students 21 minus 5 is how much? 16. This value is 6. Now question is of hypotenuse. Hypotenuse is not given, so we can take the help from this triangle. In this triangle, using Pythagoras theorem, in triangle ADC, here you can find AD square plus 5 square is equal to 13 square. So here value of AD can be calculated by simplifying this value 13 square 69. AD is equal to, directly I am writing here, 169 minus 25, which is square root of 144. That is the square root of 140. So students, here value of this is 144. We have calculated this value. Well, value of AD is coming 12. Now again in this triangle, two sides we have calculated. This side is here 16 and this is 12. So we can find third side. Third side is here AB. So we'll find here AB. AB again using Pythagoras theorem. AB square is here 16 square plus 12 square. Now your triangle under consideration is in right angle triangle, A, E and B, right angle triangle. Here 16 are 256. This is 144 and which is 400. That is under root 400. Value of AB is root 400, which is 20 unit. So this side is 20. Now our requirement is students, as we know here, हमारा आपका रिक्वायरमेंट है sec थीटा. तो sec थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोगों की हो जाएगी sec थीटा हाइपोटेन्यूस हो गई 20 और बेस 16 हो गया, and then we will reduce it to lowest terms. 4 4 जा 16, 4 5 जा. So value of sec theta is 1. This is the
value of sec theta in this question. Whenever you will look for another part of this question, you will find here from the figure is 2 given below. Find the values of sin x, cot square x minus cosec square. All these values you can find yours. Now let us trying another question here. These are some important questions. Yes. Another question we are taking up here, that is, you can see here, the question is very common question here. If tan theta is given, that is 3 upon 5, and you are to find the value of sin theta, sin theta plus cos theta over sin theta minus cos theta. तो सबसे पहले सेम प्रोसेस वी विल टेक अप, सेम प्रोसेस। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना लिया ऐसे करके, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और साइड राइट एंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ये एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेंगे थीटा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑल ऑफ अस नो, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर है x हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया 5। तो हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम साइन थीटा की मदद से, देखिए हमने यहाँ 3x और 5x लिख लिया कि हाइपोटेन्यूज हम निकालें। इसमें हाइपोटेन्यूज में क्या है, जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x होल स्क्वायर और प्लस 3x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगी। 34 एक्स स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 34 और एक्स बाहर आ जाएगा। ये टीडीएस प्रोसेस होती है। हम इसको आपको नहीं कहेंगे कि आप इनके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डालें और सिंप्लीफाई करें, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं। तो जो साइन थीटा होता है, जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 अपॉन अंडर रूट 34, और जो कॉस थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, 5 अपॉन अंडर रूट 34 हो जाएगी। और ये फिर दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 अपॉन अंडर रूट 34 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 34 ओवर ये आपका 3 अपॉन अंडर रूट 34 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 34। तो सिंप्लीफिकेशन से जो हमें वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 5 ओवर अंडर रूट 34, और ये जो वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 5 अंडर रूट 34। तो जो अंडर रूट 34 है ये इसे कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 2, फाइनली हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -4।
तो हमारे पास ये ऑप्शन है, पर इस ऑप्शन को आई डू नॉट एडवाइज यू टू टेकअप। तो हमारे पास ऑप्शन ये है स्टूडेंट्स, ये कि हम यहाँ पर जो साइन थीटा है और ये कॉस थीटा, हमारे पास वैल्यू पता है टेन थीटा की, तो हम इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करें। वो कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है कि हम यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमने कॉमन जब ले लिया यहाँ पर, ये जो है ये साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया, और ये जो है वैल्यू ये वन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा ऑन कॉस थीटा, और ये माइनस वन है, ये दोनों हमने काट दिया। फाइनली हमारे पास ये होता है टेन थीटा, साइन थीटा ऑन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और प्लस वन। और ये जो टेन थीटा की वैल्यू है, जो यहाँ पर ये टेन थीटा की जो वैल्यू है, ये हो जाएगी टेन थीटा माइनस, तो साइन थीटा और टेन की जो वैल्यू हमने निकाली थी, वो आपको मिल जाएंगी वैल्यू हियर, कि तो इस वैल्यू हमारे पास में जो है ये हो जाएंगी नंबर वन, टेन थीटा की जो वैल्यू हमें पहले से पता है, ये वैल्यू है ये अपॉन फाइव। मैं इसको आई वांट टू हाईलाइट दिस वैल्यू ऑफ टेन थीटा, दिस वन आर ट्राइंग टू this value is 3 upon 5. We will substitute this value here, 5 plus 1, this is 3 upon 5 minus 1। बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेकर के, 3 प्लस 5 ओवर 5, 3 माइनस 5 ओवर 5, 5 5 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 8 upon minus 2। Finally your value has come। Would like to appreciate you are going with this method। इसी के साथ हमारे पास जो क्लास 9 में क्वेश्चन मिलते हैं, वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर भी बेस्ड होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या है हमारे पास में देखेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर आपको याद हो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स, यहाँ पर हमारे जो एंगल हैं वो दिए रहते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, here 0 डिग्री, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल है, कुछ स्पेसिफिक एंगल। जब हम साइन जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो जीरो होती है, अपॉन टू है, अपॉन रूट टू है, ये √3/2 होती है, ये वन होती है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है वन है, और उसके बाद में ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगी cos 30 की वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, 1/√2 है, और ये आपका 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यहाँ पे 1/√3 होती है, 1 होती है,
ये √3 होती है 0 नॉट डिफाइंड एंड फाइनल। बाकी की 3 वैल्यू रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो साइन की जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आ जाएगा, राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगी वैल्यू, फिर √2 हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी 3, और ये 0/1 0 ही। कॉस का रेसिप्रोकल जो है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा में जब वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा की जो वैल्यू आएंगी 1 हो जाएगी, और ये जो है ये 2/√3 हो जाएगी, 1, ये √2 आ जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास में tan थीटा है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot थीटा होता है cot थीटा। tan थीटा में वैल्यू 0 है तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगी, ये √3 हो जाएगी, का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमें याद कर लेनी है वैल्यू। तो वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस बेसिक एंगल के, तो कर लेते हैं। अब इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन है, इन्हीं वैल्यू पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए कि 4 ब्रैकेट cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, वैल्यू आपको पता करनी है। तो अब इस वैल्यू को पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 आपने लिखा, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि ये जो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास में ये है, ये cos 60 की जो वैल्यू है हम यहाँ पर 1/2 से रिप्लेस कर दिया, और स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास में ये है। अब ये वैल्यू यहाँ पर आपने 1/2 रखी, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू यू विल मेक द स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर कर दिया, और आफ्टर दैट यू विल सिंप्लीफाई दिस, दिस विल गिव यू 1/4, this 1/4, this is 4 into 0। तो इसी तरीके से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दूसरे क्वेश्चंस भी हम अभी लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन, अगर कहीं पर 90 माइनस थीटा दिया हुआ है इस तरीके से, तो चेंज होने के बाद ये कॉस थीटा, और अगर कहीं पर ये कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा दिया है, तो ये जो है हमारा रेसिप्रोकल साइन थीटा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, रेसिप्रोकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर आपके पास में टेन थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा जो है वो आपका कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर कहीं पर कॉट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो ये जो है ये हमारा टेन जाएगा। सही। सिमिलरली अगर हमारे पास में कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा है इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा सेक।
और अगर आपके पास में sec 90 माइनस थीटा है, ये आपका हो जाएगा cosec थीटा। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं? हाउ डू वी यूज ऑल दिस? लेट अस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड by simple example here. This example will write here one question. Question is sine 28. Question is sine 28 is 28 in all here. Hence, here your question is sine 28 into sine 30 into sine 54 to sec 36, sec 36, then sec 60. now हम लोग ऐसे एंगल्स को साथ साथ रख लेंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये साइन, ये है, के बाद में दूसरा एंगल है, यहाँ पे साइन 30, तो साइन कॉम्प्लीमेंट का 28 और 90 से 28 को माइनस करेंगे तो आपके पास में ये 62 मिलेगा। तो हम तो क्या करेंगे, साइन 8 और इंटू सेक 62, मतलब जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री 90 डिग्री है वो साथ साथ हमने रखा। इसी तरीके से यहाँ पर हम साइन 54 और इसके साथ सेक्स 36 ये साथ साथ रखेंगे आप, और फिर लास्ट में साइन। तो अब इसका व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इसका बेनिफिट हमें ये मिला, देखिए ये दोनों इस तरीके से साइन 28 लिखा हुआ है, तो हम चाहे साइन को चेंज कर दें चाहे सेक को, मतलब सेक में 68 टू की जगह पर 90 माइनस 28 रख देंगे। 90 माइनस 28 रखोगे तो वैल्यू तो 68 टू ही रहेगी। सेम वे साइन 54 है, इनटू सेक की जगह पर सेक है और 36 की जगह पर 90 माइनस 54 रख दी। और उसके बाद ये जो साइन 30 है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, अगर आप यहाँ पर टेबल पे देखें, देखिए साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 वैल्यू इसकी रखें। अब आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द complements of these angles. Sine 28 is the sine 28. So here we will write sine 28 into sec 90 minus theta is cosec theta. Cosec theta means cosec 28 students into, अब यहाँ साइन 54 है, साइन 54 है इंटू ये cosec 54 हो जाएगा, cosec 54 ये वैल्यू 1/2। तो आपको यहाँ पता है कि ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन 28 इंटू 1/2
28 cos 28 की जगह वैल्यू रख दी। फिर साइन 54 इंटू 1 अपॉन साइन 54 ये हो गई, इंटू 1/2 हो जाएगी। तो जब आप इसे कैंसिल कर देंगे, देखिए तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1/2 हो गया। फाइनली आपका आंसर हो गया 1/2। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हम आप लोगों को और करा रहे हैं इसी एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज में इसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4√3, 4√3, और ये जो वैल्यू है ये साइन 40 है, साइन, और उसके साथ में है आपका सेक 30 एंड देन सेक 50, सेक 50 और ब्रैकेट आपका। फिर उसके बाद इसी के साथ है ये साइन स्क्वायर 34 है, और ये जो है साइन स्क्वायर 56 है, 50, ये आपका साइन स्क्वायर 56 है। फिर साइन स्क्वायर 6 ओवर सेक स्क्वायर 31 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 3। तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हुए हैं तो इनको ब्रेक कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये साइन 40 है और इसके कॉम्प्लीमेंट पार्ट है 50, में से एक को चेंज कर, साइन 40 सेक 30, सेक 30 की जो वैल्यू है कॉस 30, ऊपर देखिए टेबल दी हुई है आपकी, ये यहाँ पर ये, तो ये सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है, तो यहाँ पर सेक 30 की वैल्यू आप लोग 2/√3 कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये 2/√3 आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपके पास में ये जो बचा हुआ है ये सेक, तो आपने कर दिया 90 - 40, 50 की जगह पर 90 - 40 आप रिप्लेस कर सकते हो। के बचे हुए पार्ट में किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, जो आपको मर्जी हो, साइन स्क्वायर 34, और हम जो है यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 58 6 की जगह पर 90 - 34 रिप्लेस। अब उसके बाद यहाँ भी वही काम कर लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर 31 माइनस कॉट की जगह पर कॉट स्क्वायर है 90 - 31, यानी 59 की जगह पर रख दिया ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस ये 4√3 यू हैव कॉपीड एज इट इज, ये साइन 40 एज इट इज, 2/√3 as it is, no change. This can be sec, sec is cosec 40, is cosec theta. Similarly you can go with other, here sin square 34 plus this is sin, so we'll change it to cos, that will give you cos square 34, and in denominator sec square 31 minus tan square,
31. Ultimately, what we need to do is here we can directly or write, or we can write one more step. 4 by root 3. This is sine 40. This is 2 by root 3 as it is into this is cos. So here you can write here sine 30 degree was students 40. Now plus is sine square theta plus cos square theta, this is 1, and tan square theta sec square theta minus tan square theta is also 1. This sine 40 and sine 40 will get cancelled. Root 3 and root 3 will cancel. So 4 3 the 4 to the 8 and 8 plus 1. So our final result is, this is all about trigonometry in class 9. Thank you very much. Love you. Bless you. Everybody. Nice day.